everyone. I'm Hardeep Kaur. Today's my topic is education. Education is a give and take activity where a person gives the knowledge to the other person. For example, a teacher. A teacher gives the knowledge to their students. And the other way when we take the knowledge, because the student is also taking the knowledge from the teacher. So this is an give and take activity. Mainly, education plays an important role in everyone's life because it helps us to uh, develop our personality. There are mainly two types of education: formal and informal. First of all, I talk about the formal education. That what is formal education? Formal education is given in the some specific institutions like schools, colleges, and some institutes. So this is called formal education, where a teacher gives the knowledge to the students. There is one particular class for the students where they take the knowledge. There are a number of advantages of formal education. Like, so first of all, it helps to develop the relationships with the other people. For example, when a student goes to the school, then they meet the other students, like the peer group is formed. So it helps the student to develop their peer groups with the other students. So it is also good for the healthy relationships with the other person. The other advantage of formal education, that it helps to increase the knowledge of every person, because when we meet to the other persons, then it helps us to develop the ideas, and when we exchange the ideas with each other, then it helps us to increase our knowledge also. The other and the major advantage of formal education, that it gives us opportunities, job opportunities. Like, because when the people is when we are educated, then the towering firms also gives us opportunities for the jobs. So it is also a good source of income. So it also improves the income of the person. Even it is a major part of the to increase the poverty of any country. Another advantage of formal education is a gender equality, because in a class both girls and boys studying in the same class, so it removes the gender inequality from the minds of the people. There are some disadvantages of formal education also. One of the major disadvantage of formal education, like biasness. Sometimes the teacher create the biasness in the class, and sometimes, like, the poor students think that they are lacking behind from the intelligent students. So it creates the biasness in the mind of the students. Sometimes it also sometimes these students create some crimes because of this. Like, for example, if I talk about, like, if a student get a if a student gets lower marks in the class, sometimes they attempt suicide. And now I talk about the another form of education, that is informal education, which we take from our home. Like, even a child's education starts just from the birth, like how to hold a spoon, how to walk. These are the type of informal education where their parents are their are the teacher of the children, and children is the student of their parents. Even some moral education, like honesty, uh, how to talk with other people, respect. These are also included in the informal education, because we learn it from our home. Our home environment is a major part which plays in the education of the child. There are some also disadvantages of informal education, like sometimes, because the area is not that much big. So we should improve the education system day by day, because education is a weapon which helps us to improve our word, even to make the better word. So it is very mandatory to improve the education system, so that a student takes the knowledge in a good way. Thank you so much. Education is create a difference between a human and a animal. And,
With the help of education, we can get achieve any we get any achievement in our life. Education is a very important of our life. It is a lifelong process that's never end. Edu- proper education Proper education improves people understanding around the world, and it's provide a good society. Education plays a vital role in our life. Certainly, the lack of ideas, lack of any creative skill, which is preventing us from expressing our thought. Thought नहीं express हो रहे, किसी के भी नहीं हो रहे. Creativity है, creativity is hindering us. No grammatical rule, nothing else. Creativity is hindering us. We are seeing in a narrow perspective. We are visualizing a world which is just your home, your house. You are wandering within that house. Please break the limits. Please put an halt to those limits and think creatively. What the education can achieve? Achievements. Nobody considered the achievements. They put the topic to a rest in formal and informal. Yeah, ma'am, it is the formal and informal writing. We have learned a lot through formal as well as informal education. They are the essential of humankind. But what other achievements there are there? No achievement is there before, if we leave the stress, if we leave the formal education, if we leave the informal education, there is nothing on the panorama. कुछ भी नहीं है. Huge scientific advancement was made. Huge scientific advancements were made due to the education. First and foremost, we remember those figures, those towering figures who helped us to create a world which would be completely different if they hadn't existed. अगर वो नहीं होते तो ये वर्ल्ड ऐसा नहीं होता. ठीक है. About 7 million years human made no progress. कोई progress नहीं थी human के पास में. 7 million years human remained solely on sustenance. उनका अस्तित्व बस खाना पीना पेट भरना ही उनकी जिंदगी थी. But last 200 years changed our view. It is through the dissemination of books. Mass printing changed everything. The education was limited to the royal families, to the higher echelon, to the rich, to the wealthy people. But now it is available to a person living in a village. है नहीं है मैम? But nobody venture that far. You have restricted yourself. You have enchained yourself. Nobody is chaining you beside you. You have to learn that how to express your idea. First, the realm must be wide, and then you have to refine those ideas. You have to converse those ideas so that ideas run smoothly. Some of the mistakes I have already made clear that creativity plays an important role, and the thing we are lacking most is the creativity. आवर जो थिंकिंग हैज़ कम टू ए हॉल्ट. हम बिल्कुल रुक चुके हैं, हम ठहर चुके हैं, कुछ भी नहीं सोच पा रहे. तो क्यों नहीं सोच पा रहे? एजुकेशन में दोष रहा, क्रिएटिव आइडिया नहीं रहे. रीडिंग मैं नहीं जानता, या रीडिंग आपकी बहुत कम रही, आपने पढ़ा नहीं, फिक्शन नहीं पढ़ा कभी, पता नहीं क्या है. पर आप जहाँ पर स्टिक हो जाते हैं फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते. ये दिल्ली मैं एक बार कहते कहते आप सोचिए, बड़ा सोचिए, एक खाली पेज उठाइए, पेपर उठाइए और लिखिए क्या सोच सकता हूँ फील्ड के बारे में. ठीक है. नो ह्यूमन रेस कैन सर्वाइव विदाउट द एजुकेशन. इज ट्रुथ है, ह्यूमन रेस सर्वाइव नहीं कर सकती. वी डिपेंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन एजुकेशन. किस पे डिपेंड करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. इवन द क्रूड एनिमल्स डिपेंड ऑन एजुकेशन. दे कांट सर्वाइव विदाउट एजुकेशन. एजुकेशन वो सर्वाइव नहीं कर सकते. कैंगरू सर्वाइव नहीं कर सकता, मंकी सर्वाइव नहीं कर सकता. बट आवर नीड इज समथिंग डिफरेंट. आवर नीड इज समथिंग डिफरेंट. वी आर द highest animal, highest living on earth. अर्थ पे सबसे हाईएस्ट लिविंग है. हाईली इंटेलेक्चुअल. वी प्रोफेस दैट वी आर द वन ऑफ द सेलिब्रेटेड गिफ्ट ऑफ नेचर. सेलिब्रेटेड गिफ्ट है हमारे पास, सेलिब्रेटेड गिफ्ट है हम. बट वी आर प्रूविंग दैट वी आर नथिंग. Again and again, class after class, I am saying that we are nothing. We are nothing.
we are hollow, and we have created ourselves thus. Now we come to the grammatical mistakes, which the recurrent theme, formal, informal, should be like an undercurrent. It should be like an undercurrent. It shouldn't be stretched too far. इसको stretch नहीं करना था ज़्यादा, पर focus किस पे हो गया, पूरा topic ही change हो गया. Then you meandered to formal education. Then you talked about that there are benefits. Then return to the dangers, and afterward you forget. You took the second topic, home learning, and then return again to the formal, then ventured again to the formal. Then you can see yourself, you can listen yourself, the recording is there, you can't deny. I have reported your progress entirely. The map is there in front of me, and ma'am, seriously, I can't say the things which you don't possess. नहीं कह सकते, बहुत दिक्कत होती है कहने में, क्योंकि आप वही गलती करना, एक दिन सही आते हैं, कल सही एक्सप्लेन किया पॉइंट को, टाइम 2 दिन मिल गए, फिर उसी पॉइंट को आप फिर वही कर देते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं बहुत गलती से, वो गलती दोबारा रिपीट हो जाती है, पिछला भूल जाते हैं नॉलेज. तो हुआ गया था, जो मैनी ऑफ द साइंस फिक्शन टर्न्ड इनटू रियलिटी, साइंस फिक्शन थे 19th सेंचुरी के. ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाज ए फिक्शन रिटन बाय एडलस हक्सली ने फिक्शन लिखा था. ब्रेव न्यू वर्ल्ड बहुत ग्रेट फिक्शन है, लिखा था. तो क्या था कि जो ऑफस्प्रिंग हैं आर पॉसिबल विदाउट ह्यूमन बीइंग्स. तो हो गया IVF है टेक्नोलॉजी. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द पेरेंट्स विद किड्स विच लैक्स देम. जिनके पास नहीं है हु लैक्स देम, जिनके पास किड नहीं है उनको प्रोवाइड कराते हैं. IVF से लाखों बच्चे पैदा हो चुके हैं. And the next stage is about to come where women are no longer needed in order to produce kids. आर्टिफिशियल वूम है. नेक्स्ट स्टेज क्या है, आर्टिफिशियल वूम है, जो कि बहुत ज़्यादा फंडिंग हो रही है. इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, सबसे बड़ा उद्योगपति वर्ल्ड का, मैं नाम भूल गया उसका, कौन है सबसे रिच जो है, एलन मस्क इज फंडिंग फॉर एलन मस्क है वो आर्टिफिशियल वूम वास्ते फंडिंग कर रहेगा. Next stage, IVF, the egg is transplanted into the mother's womb again after preserving it for 2 or 3 days. But the next theme is that there is no need of womb at all. The entire baby can take place on earth. Test tube baby was the IVF technique without any mother womb. No mother womb is required. He says that it's our duty to liberate women from the pains and sufferings of those women, because they can't stand equal to the man because of this alone thing, single thing, which really prevents them to achieve equality करने का जरूरत ही ना पड़े. तो पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो माँ नहा बाहर से बच्चा लेके और पूरी की पूरी ज़िंदगी डेडिकेट होती है क्रिएटिव आर्ट्स में चली जा सकती है. वो बहुत बड़ी विद्वान हो सकती है, डॉक्टर बन सकती है, साइंटिस्ट बन सकती है. और वो पीरियड ऐसा क्रूशियल पीरियड है जहाँ बच्ची पीछे चली जाती है और लड़के आगे निकल जाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत कुछ है कहने के लिए. कैंसर है, अब अभी तक प्रीलिमिनरी स्टेज में है कैंसर, परंतु अभी तक भी बहुत बंदे क्योर हो रहे हैं कि नहीं. हमने ये साइंटिफिक एडवांसमेंट किसके कारण पॉसिबल हुई है. अगर बुक्स नहीं होती, अगर बुक्स सिर्फ और सिर्फ रिजर्वा होता इनका वेल्थी पीपल का, तो कोई साइंस नहीं प्रॉस्पर होती. ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आई, प्रिंटिंग प्रेस चेंज्ड एवरीथिंग. प्रिंटिंग प्रेस ने सब कुछ चेंज कर दिया. एजुकेशन विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू द वेल्दी पीपल नाउ अवेलेबल फॉर द मास के लिए अवेलेबल होगी. It changed everything. No need to say that we learn at home, we get the education at home. Yeah, it's the reality. Before, our ancestors were fighting for food, they were starving, the conditions were harsh, the reality was much worse than today. They solely depend on sustenance, and they have to know which fruit is eatable, edible or non-edible. It's their duty to know, because they can't survive without that knowledge. That knowledge was essential for their sustenance. सर्वाइवल के लिए जरूरी था. पर आज सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं. वी आर सिटिंग इन ए कंफर्ट रूम, कोजी रूम, equipped with AC, and no society can boast that we should return backward to our ancestors. We should start living in jungles again. Nobody can say that. If it is your sole purpose, nobody is here. होता कोई यहाँ पे
कोई नहीं होता। अगर आपका यही सोल पर्पज है कि जंगल में वापस जाना है, पेड़ पत्ते ही खाने हैं, पौधे ही खाने हैं, कोई नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बार बार मैम कह रहा हूँ। फिर आपने कुछ गलतियाँ की, जो मैं गलतियाँ मैं वो कल्मिनेट करता हूँ। टीचर स्टूडेंट रिलेशन, यू स्पोक ए लॉट अबाउट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। इट इज समड अप इन 3 words: टीचर स्टूडेंट एनवायरनमेंट। टीचर स्टूडेंट एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज विद इन इट, एनवायरनमेंट में सब कुछ आ जाता है फिर। ठीक है, एंड बायस, यू रेज द इश्यू ऑफ बायस, इट्स द सीरियस इश्यू। बायस है क्लास में, कुछ बच्चों को प्रमोट किया जाता है, टीचर कुछ को डिमोट करते हैं, आता खुद को कुछ नहीं होता पर करते हैं बच्चों को डिमोट। बायस बहुत ज़्यादा है टीचर में। ठीक है, नहीं होनी चाहिए पर है, सही है, इश्यू सही है, पर कंटेक्स्ट में सही लग रहा है मैम आपको। एजुकेशन, जहाँ पे मैं वाइड पर्सपेक्टिव एजुकेशन लिया था, यहाँ पे बायस की बात आती। अगर मैं स्कूलिंग की बात करता तो बायस सही था, पर अगर हमने बहुत बड़ा समुंदर है, उस समुंदर में एक नाला मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है वैल्यू मैम? यही तो दिक्कतें, यही तो मैं कह रहा हूँ। फर्स्ट डे से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई एम फ्रैंक विद यू। मैं फ्रैंक रहने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कंसनट्रेट सेंटर्ड हूँ ज़्यादा, परंतु आइडियाज़ का जो परव्यू है बढ़ाइए, थोड़ा सा आइडियाज बढ़ाइए। एक लाइन पढ़ ली, उसी को इल्यूमिनेट करने में सारी ज़िंदगी नहीं निकालनी अपने को। प्रेशर बिल्डिंग इस रियली, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट था, प्रेशर बिल्डिंग हो रही है, जो क्या है, प्रेशर बिल्डिंग हो रही है। पर प्रेशर बिल्डिंग की बात ना करके हम अगर ये कहते कि with a good education at our hand we can cope in a better way with the pressure, ये बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया होता है कि ये ज़्यादा बढ़िया? कौन सा पॉइंट ज़्यादा बढ़िया? अगर हमारे हाथ में एजुकेशन होती तो हम बहुत अच्छा कोप करते, किससे? प्रेशर से। ये ज़्यादा बढ़िया पॉइंट था। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट स्कूल्स आर putting a huge pressure on us and there is a huge stress on us, फिर वही बात होगी, नेगेटिव ही होगा। कौन सा ही होगा? नेगेटिव। इसके जगह पे अपने यूज करते कि प्रमोट, जो एड्रेस प्रेशर है उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। वी हैव सीन द साइंटिफिक एडवांसमेंट, द ग्रीन रेवोल्यूशन alone is enough to save us from hunger। अगर देश जिंदा है, 600 से 700 करोड़ आबादी देश जिंदा है, तो एक चीज़ थी ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या थी? ग्रीन रेवोल्यूशन साइंस की देन है, एजुकेशन की देन है। किसकी देन है? एजुकेशन। जो किसानों की बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, उनको पता है कि हमारे खेत में पहले 4-5 क्विंटल बिगे कणक होती थी, 4 या 5 क्विंटल बिगे की कणक होंदी सीगी। वो भी कणक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ कि खाण लायक भी नहीं होंदी सीगी, दाने इन्ने खराब होंदे सीगे। आ किहदी देन है? एजुकेशन है। की है? एजुकेशन है। जेनेटिक मॉडिफाइड बीज नैक्सट स्टेज होती, जेनेटिक मॉडिफाइड ਜਿਹੜੇ सीड्स है ਜਿਹਦੇ वास्ते सरकार लड़ रही है, नैक्सट स्टेज है। ਉੱਥੇ 40-40 क्विंटल बिगे की कणक निकले नहीं निकलेगा? यील्ड होगा नहीं हो प्रॉपर? यील्ड ਵਧੂਗਾ नहीं ਵਧੂਗਾ? यील्ड, प्रोडक्शन ਵਧੂਗੀ, प्रोडक्शन ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन was impossible and still the new technical advancements are impossible without education। अगर कोई देश कह दे कि एजुकेशन खत्म कर दूं, सारे स्कूल खत्म कर दूंगा, तो कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पॉसिबल हैगी? कोई फैक्ट्री लग जाऊगी, नवी टेक्नोलॉजी आ जाऊगी? नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं हो सकता एजुकेशन के बिना। एजुकेशन का पर भी तो बहुत बड़ा सीगा, पर ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? we can take the example of where the fiction, in the fiction there is the theme, recurrent theme, that machines can dominate us. One day the machines can dominate us. It's the possibility, it's the danger for the humanity, that if machines go on and on, they went to an higher stage after stage, they are getting improved, they are improving day by day, that one day will come we are slave of the machine, we are becoming the slaves of the machine. This is truth, there is a truth. The world is becoming the slaves of the machines. We rely heavily on machines, so one day will come that the world will become the slave of the machine. It's the possibility, it's the darker side, it's the darker side, but positive side is there. Positive, the first and foremost personality which comes to in mind is the greatest scientist Stephen Hawking. He is paralyzed, but still his book is best selling लिस्ट में मैम उसकी बुक। पैरालाइज्ड है, बोल नहीं सकता, आइज ब्लिंक होती है सिर्फ उसकी एक ही, और उसकी जो बुक है बेस्ट सेलिंग में है। क्या है? बेस्ट सेलिंग में। विदाउट टेक्नोलॉजी दैट थीम वाज अनथिंकेबल, थिंक भी नहीं कर सकते थे। अगर उसकी मशीन ना होती, जो वर्ड, जो सिंथेसाइजर है, स्पीच सिंथेसाइजर हटा लिया जाए, रिमूव कर लिया था उससे, तो स्टीफन हॉकिंस से कुछ भी नहीं होती। स्टीफन हॉकिंस ने जितनी भी रिसर्च की है फिजिक्स में, वो किसके दम पर पॉसिबल हुई है?
गॉड पार्टिकल को डिनाई किया है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे। गॉड इज नॉट ए नेसेसिटी फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। अगर इस थीम को उन्होंने प्रूव किया है तो उनके पास क्या था? मशीन थी। उनके पास क्या था? मशीन थी, हाथ नहीं थे उनके पास में। ठीक है, उनका कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं काम करता, उनका एक भी अंग काम नहीं करता था। तो ये किसके कारण है उसका? स्टीफन हॉकिंस ने रिसर्च करके इतने महान फिजिसिस्ट बने, ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट हैं अगर मैं बात करूँ तो आज तक के। किसके दम पे थे वो? कुछ हिलता था उनका? थोड़े तो पैर भी हिलते ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਵੀ ਹਿਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੇਅਰ ਰਿਡਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਜ਼ ਕੀਪਿੰਗ ਮੀ ਅਲਾਈਵ, the chair is taking me the home, and simply the thinking process is turning on the fan, and it's my television is operated through my mind। मेरा माइंड ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਦਾ এনवायरमेंट ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। इन्फ्रारेड इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन है मैम ये। सब एंजॉय लिए लाइफ के, सब कुछ जिया, जिसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक आई ब्लैंक होती थी हल्की सी, बस कुछ भी नहीं था, बाकी सारा शरीर डेड था कि नहीं मैम? पॉसिबल था? नहीं सी पॉसिबल मैम। पर ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਮ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੁਲਾ ਲਓ ਘਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਘਰ ਇੱਕ ਨਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੋਲ ਲੂੰਗਾ। ਘਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਘਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲ ਦੇਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਈਡੀਆ ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਮ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਦੱਸੋ? There are certain things which are part and parcel of creative writing. The undercurrent is always stays below the current. Undercurrent है, current ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? current ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। If the undercurrent overtake the current, it's a huge mistake. It's a huge mistake in creative writing। अगर undercurrent current ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਜੋ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ, ਡੇਂਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਕੀ ਹੈ? ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਡ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਮੈਮ, ਬੈਠੋ 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 8 ਘੰਟੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ 8 ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। 8 ਘੰਟੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ 8 ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਪੇਜ ਭਰਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ 3 ਪੇਜ ਭਰਨ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਪੇਜ ਕਿੰਨੇ ਭਰਨੇ? 3 ਭਰਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਪੂਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਟ ਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਗੈਟ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਗੇਨ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਗੇਨ ਹੈ। ਗੇਨ ਵਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ? गेन वर्ड ज़्यादा यूज होता है। मैं नहीं कहता गलत है, स्टाइलिस्टिकली ऑड है, स्टाइलिस्टिकली ऑड है, अपन बचना चाहिए। ठीक है, उदों बाद तुसी गिव एंड टेक ते बहुत जोर दिता, गिव एंड टेक रिलेशन, गिव एंड टेक रिलेशन। उदों बाद तुसी रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप यू लिंजर हैवीली ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग्स और एक्ट एज नॉलेज ते नॉलेज नू गेन करना, नॉलेज नू बढ़ाते, नॉलेज बूस्टर कहते। की कहते? नॉलेज बूस्ट ज़्यादा वधिया हुंदा। एक वर्ड च लगा खत्म हो जाता। नॉलेज बूस्टर है। की है? एक्ट एज नॉलेज बूस्टर। अच्छा वर्ड है, अच्छी फ्रेज है, फ्रेज में भी सोहना करो। ठीक है, आप सवेरे सवेरे जो सवेरे उठ के मूँह तो शीशे रोज़ ही वेखते हैं, पर जो लिखा वो नहीं वेखते। ठीक है, शीशे वेखते हैं, कितने कालस ना लगे माड़ी जी कितने। ठीक है, पर इनू वेखो नेचर ऐ बड़ा निकल जूगा। जॉब अपॉर्चुनिटी की गल की, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इज एंड स्टिल I think that will be the huge trouble for the world to come, and the single solution is the education। sole solution is the education। sole solution की है? education है। अब फिर मैं कह रहा है, मैं नेगेटिव भी दस रहा पर कल्मिनेशन लाइन का नाल पॉजिटिव जोड़ता। की जोड़ता? पॉजिटिव जोड़ता है। सोल एजुकेशन, सोल सोल्यूशन की है? एजुकेशन ही। ठीक है, वी हैव क्राइड ए लॉट while the computer came on earth। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਲ ਰਿਪਲੇਸ ਅਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਪਲੇਸ ਅਸ, ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮੋਸਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਨਾਓ ਅ ਡੇਜ਼ no one can
लिव ए सिंगल डे विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज माइक्रोचिप्स। चाहे मोबाइल है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे कोई रह सकता, एग्जिस्टेंस ही नहीं। ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की गल की होगी, अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब होगी, तो एक ਤੁਸੀਂ क्या रिड्यूस द पावर्टी, रिमूव द पावर्टी, रिमूव द पावर्टी जगह इलीमीनेट द पावर्टी वर्ड ज़्यादा वधिया। इलीमीनेट करना होंदा है, खत्म करना, रिमूव भी खत्म करना होंदा है, पर पावर्टी ना इलीमीनेट द कोलोकेशन ज़्यादा वधिया। तुसीं पढ़े होने कदे। ठीक है। जेंडर ते फोकस किया, जेंडर इनइक्वैलिटी, जेंडर इनइक्वैलिटी ते फोकस किया। पर जेंडर इनइक्वैलिटी जिहड़ी सीगी, जेंडर इनइक्वैलिटी सीगी, इहदे नूं खत्म कर सकदे सीगे कि विमेन लिबरेशन made it possible for the women to vote equally, या made possible the universal franchise। की बनाया? यूनीवर्सल फ्रेंचाइज बनाया। बुढ़ी दे वोट का भी हक एक ही है, तो बंदे दे वोट का भी हक एक ही है। एक ही वोट बंदे बुढ़ी की काउंट होंदी है, एक ही बंदे यूनीवर्सल जी फ्रेंचाइज हैगी है, वो देना एजुकेशन की। की देना? एजुकेशन की। की देना? एजुकेशन की। ठीक है। सुसाइड, still I can't cope up with that idea, I have nothing to explain that idea, I cut it। ठीक है। दा तुसी कैसे दे टर्न क्रिमिनल, तुसी क्या दे बिकम क्रिमिनल, टर्न क्रिमिनल होंदा की होंदा? टर्न क्रिमिनल। द एजुकेशन सिस्टम प्रिवेलिंग टुडे इज टर्निंग देम क्रिमिनल। की बना रहा इन्हों? क्रिमिनल बना रहा इन्हों। इन्हों की बना रहा? क्रिमिनल बना रहा। पर फिर भी आई स्टिल disagree with that idea, I don't know where to put that idea in the context of education। I've completely failed to understand, I have nothing more to say about this, to turn criminal and suicide beyond my reach। Surely if the topic was school education, then those issues can arise, but here there is no need to। Maybe my thinking may be narrow one, I don't know, but still I think that there is no place for these ideas। मैं दोनों आइडिया कटदा। अचीवमेंट की गल की, सही गल हैगी है। पुअर स्टूडेंट प्रैशर बिल्ड, एक तुसीं बहुत वड्डी गलती करते हो, सब बच्चे करते, बहुत वड्डा वर्ड चुक देंगे, एम्पैथाइज वर्ड चक्या मैम ने। ठीक है। एम्पैथाइज वर्ड चकना अच्छी, मैं थोड़ी गल मैं थोड़ा गल नहीं कर रहा, मैं कभी भी स्पैसीफिक नहीं बोलता जिंदगी जिन्ने चर टीचिंग एक्सपीरियंस रहूगा उन्ने चर मैं कभी स्पैसीफिक नहीं बोलूँगा। मेरे वास्ते ऐस बच्चे थोड़े कोई फर्क नहीं गा, मेरे वास्ते गुरप्रीत समीक्षा कोई फर्क नहीं गा, तो मेरे वास्ते गुरमीत कोई फर्क नहीं, जो बच्चा बैठा इक्वल है सारे। ठीक है। पर मैं पॉइंट कह रहा हैं, मैं थोड़ा कह रहा कि बच्चे अक्सर वड्डा पॉइंट बहुत वड्डा वर्ड चकते हैं, एम्फैथसाइज। वो तो एम्फैथसाइज चक लिया, चलो ठीक है, वो तो बोलिया नहीं जाता, फिर उलझ जाते हैं, कुछ 3-4 सेकंड लगते, फिर एम्फैसाइज किया, फिर की किया? एम्फैसाइज किया। तो बचिया करो ये वर्ड्स तो, आप वर्ड ही चकना जिन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस आप बोल देंगे, जो ना बोल पाऊंगा ना चको। होम मेकिंग, होम मेकिंग तो वधिया टॉपिक सीगा। तुसी एंसेस्टर तो जगदे, कितों जगदे? एंसेस्टर जगदे। व्हाट हैव वी गॉट, द वी आर हियर बिकॉज ऑफ देयर लर्निंग, बिकॉज ऑफ देयर लर्निंग। पर फिर भी कुछ नहीं सीखा उन्होंने। 7 ਲੱਖ साल 70 ਲੱਖ साल कुछ भी अचीवमेंट नहीं सी ह्यूमन को। 200 साल अचीवमेंट्स है, जिन्नी अचीवमेंट्स तुम देख रहे हो, जो कुछ देख रहे होंगे। तो हिटलर ने क्या सीगा, इफ द मैन ऑफ द अर्ली 90s कम टू द अर्थ, अगर दोबारा आ जाए, ही विल बी अमेज्ड दैट इवन ए 7-year किड्स possess more knowledge than him। ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1900 ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਵੇਖੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਟੀ ਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, मोबाइल भी कोई चीज़ है। तो अजकल 3 साल के जवाक को पता है। ठीक है। उन्हें 15 साल क्या, मैं 3 ईयर करदा है, वो 3 साल के जवाक तो भी चकमा खा जाऊगा। ठीक है। जो 1900 मरिया हुआ उन्हें हवाई जहाज नहीं पता की होंगे, 3 साल के जवाक को पता यूट्यूब पर वेख लेना, उड़ता ही होंगे। तो जवाक ने कहता तो उन्हें मनना नहीं गा, उन्हें कहता कंप्यूटर होंगे कि क्यों गप मारी जाना, इन्नी जो उम्र जोई है, कितने होंगे कंप्यूटर। ठीक है। कितने होंगे मोबाइल, कितने होंगे टी वी, क्योंकि नहीं सीगा, पर थोड़े कोल तो हैगा, तुसीं तो वेख्या सारा कुछ, तुसीं वेख के भी उत्थे पहुँच जाते हो, तुसीं सब कुछ वेख्या, तुसीं टैक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जी रहे हो, कदे जी रहे हो, टैक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जी रहे हो तुसीं तो यार। ठीक है। प्रेशर बिल्ड एम्प्टी, मैम
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਜਵਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਸਟੰਬਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟੰਬਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੰਟੈਂਟ ਲੈਸ ਟਾਕ। content less talk is never ever happen, ठीक है, should never ever happen। आज ही अपन याद रखनी है, कंटेंट क्रिएट करो मैम हर एक बच्चे हर बच्चे जो बच्चे इतने बैठे नवे हैं उन्होंने आदत पा लो कि टॉक कंटेंट होना चाहिए। if you are studying Hitler's autobiography main camp, you are seeing the world through the eyes of Hitler the eyes ਨਾਲ world ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं, but his picturization is vivid, ਉਹਦਾ picturization ਬਹੁਤ vivid ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। you really assimilate into the Hitler's character, ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਿਟਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਹਿਟਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਥੋਟਸ ਹੈ ਕਲਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਟੀਫਨ ਹੌਕਿੰਸ MIT ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ in average human beings there are 20 and 25 bits of information in a minute, 20 ਤੋਂ 25 ਬਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a bit, but while I come to a politician it's almost zero, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, गुमराही करना होंगे। और जो कि जो पॉलिटिशियन की गल करदा मैं तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी, सब गुमराह किया जाता, जीरो इन्फॉर्मेशन होंगी, कितनी इन्फॉर्मेशन दी, जीरो इन्फॉर्मेशन होंगी है। पर अपनी तो 25 तक 15 5